Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. I'm your science teacher and this is going to be your first lesson of class 5 subject creativity and innovation. So let's start the lesson. Learning objectives. By the end of the lesson, students will be able to describe how energy can be transformed into other forms of energy. Understand that a simple circuit requires a complete electrical pathway. Describe charges and their properties. So dear students, the topics we are going to study today are energy and forms of energy, electricity and structure of an atom. The material required for this lesson is lead pencil, eraser, highlighter, black pointer, ruler, pen, resource pack. So students, take out your resource pack, open page number 93. Write day, date and today's task at the top of the page. Highlight the underlined points here. Energy. Ability of a body to do work is called energy. All living and non-living things requires energy to do work. Energy comes in various forms. So students, what is energy? Ability of a body to do work. काम करने के लिए किसी भी बॉडी के एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. We know that every living and non-living things need energy to do work, as we are a living thing and we need energy to do work. So every living thing and non-living thing needs energy to do work. Energy comes in various forms like sound energy, heat energy, light energy, thermal energy. These are all kinds of energies. Forms of energy. There are many forms of energy. Some forms of energy along with examples are given below. So students, how many forms of energy? Yes, there are many forms of energy. Some are given here with examples. So let's start reading them. Number 1 is sound energy. It's the energy of sound waves. Sound waves travel through the air or through other mediums, that is solids and liquids. Sound energy क्या होती है? It is in the form of sound waves and it can travel through air or any other mediums. And what are the other mediums? The other mediums are solids and liquids. For example, a sound of tape recorder, and second one is a song played on a stereo or your voice. Your voice or a song is also in the form of sound waves. And a sound of a tape recorder, when you switch on the tape recorder, it will give out the sound in the form of sound waves. Second one is thermal or heat energy. It reflects the temperature. For example, a cup of hot coffee has thermal or heat energy. You have seen a cup of hot coffee. It will, when you touch it, you felt hotness and you have seen that. Third one is electrical energy, as the energy caused by moving electric charges. For example, washing machine and blender use electrical energy to work. Energy which is caused by the movement of electric charges is called electrical energy. Example is washing machine and blender. When we switch on the washing machine, the electric charges will flow and the clothes are washed, same as in the case with blender. One form of energy can be converted to another form. This phenomenon is called transformation of energy. One energy can be converted to another form. We call this phenomenon as transformation of energy. As sound energy is converted from electrical energy, like as electrical energy can be converted into heat energy or light energy. These are all examples of transformation of energy. So students, can you tell me a few examples of energy transformation? Okay, I'll tell. Here are some of the ways that energy can change, transform from one form to another. So here are some examples. Let's see. Battery and torch. The battery will give chemical energy and it will be converted into light energy. And how it is formed? Okay, I'll tell. When we put the battery in the torch will light up. So the battery will give the torch chemical energy into light energy. Same as the case in the fuel. Fuel is the chemical energy. When it is filled in the car, it will convert it into mechanical energy. As like we eat food, this man eat food
and his energy, food converted his energy into mechanical energy. Like as electrical energy is converted into light energy when switch off the light. Same as in the case in electrical energy, when we put on the electrical energy of an oven, its electrical energy can be converted into heat energy. Diagram showing how different forms of energy can be converted to other forms of energy. What is electricity? Electricity is a form of energy that can build up in one place and flow from one place to another. इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की किस्म है जो कि क्या करती है, एक जगह पे तो बनती है लेकिन फ्लो करती है वन प्लेस टू एंड अदर. टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स अ कंप्लीट पाथवे. एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ बाय अ स्विच. हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को वर्क कैसे करवा सकते हैं कि हम उसके साथ एक स्विच लगाते हैं. स्विच ऑन, व्हेन वी स्विच ऑन the electric circuit will work, and when we switch off the electric circuit will off. The switch forms a bridge in the path of the flow of electricity. When you turn the switch on, the current flows along the wires because a small metal piece inside the switch completes the circuit. This is known as a closed circuit as it allows the electricity to flow without interruption. जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, मेटल वायर्स लगी होती हैं स्विच के पास से, उसमें से करंट फ्लो करता है. जब उसमें से करंट फ्लो करता है और स्विच हमारा जो होता है वो ऑन होता है, इसका मतलब ये है कि वो सर्किट जो है वो क्लोज सर्किट है, उसमें से करंट जो होगा वो इजीली फ्लो कर जाएगा, हमारा बल्ब जो होगा वो लाइटन अप कर जाएगा. इसलिए क्लोज सर्किट जो होता है वो प्रॉपर सर्किट होता है किसी भी लाइट को वर्क करवाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराने के लिए. सेम एज द केस इन एन ओपन सर्किट. In an open circuit, the switch is open. When you turn the switch off, the metal piece moves away from the wire and the electric current stops flowing. This is known as an open circuit because it does not allow electricity to flow through it due to a break in the electrical path. जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो करंट जो होता है उन मेटल वायर्स में से मूव नहीं करता, तो वो फ्लो करना बंद कर देता है. इस सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट एंड इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो. तो उसका पाथवे जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास. इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. पहले ही मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म है. कैसे पैदा होती है, दैट कैन बिल्ड अप इन वन प्लेस, एक जगह पे बनती है, किस लिए बनती है, और फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या एक जगह पे बनती है या एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, तब क्या फॉर्म होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है. When you turn on a light, जब हम एक लाइट के स्विच को ऑन करते हैं और ring a doorbell, हम डोरबेल पे जाते हैं, it is electricity. यहाँ पे क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है. That makes the light work and the doorbell ring, जो क्या करती है, लाइट को चलने में मदद देती है और डोरबेल को रिंग करने में हेल्प करती है. Now, structure of an atom. Did you know what is atom? Have you studied what is atom? Yes, the smallest particle of an element is called an atom. किसी भी पार्टिकल जो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. तमाम मटेरियल्स जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं. मॉलिक्यूल्स आर बिल्ड फ्रॉम एटम्स. और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, एटम्स से. एटम्स हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस इनसाइड देम. एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. इन द सेंटर ऑफ ईच एटम देयर इज अ न्यूक्लियस. यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे एक एटम की शेप पिक्चर बनी हुई है, इसके सेंटर में जो है वहां पे उस चीज को हम क्या कहेंगे, उसका न्यूक्लियस कहेंगे, जो उसका सेंट्रल पार्ट होगा. और जो न्यूक्लियस है विच इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये जो रेड कलर के हैं वो प्रोटॉन्स हैं एंड जो ब्लू कलर के हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, एक एटम का न्यूक्लियस बनता है. देयर आर टाइनियर पार्टिकल्स दैट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. अब इस सर्कल जो सेंटर वाला है, इस न्यूक्लियस के टाइनी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है. उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. वेयर डज द इलेक्ट्रिक चार्ज कम फ्रॉम. ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो एटम पे रखते हैं ये कहाँ से आते हैं. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ईच कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. Electrons have a negative charge. Electrons के ऊपर एक negative charge होता है, while protons have a positive charge. और protons के ऊपर क्या होता है, एक positive charge यानी plus charge होता है, which is equal in size to the charge on the electron.
लेकिन प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली साइज में होता है, जो कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पार्ट होते हैं, यानी इधर ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, तो ये दोनों इनमें क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ऑलवेज रिमेन अटैच टू एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा से एटम्स के साथ अटैच नहीं होते। दे कैन बी मेड टू फ्लो इजीली थ्रू कॉपर वायर्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली मूव करवा सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं। किसके जरिए से? कॉपर वायर्स के जरिए से। बाय सेल्स एंड बैटरीज विच प्रोड्यूस देम, किसकी वजह से? सेल्स और बैटरीज की वजह से, जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज आता है। So students, open page number 106. Write date and today's task at the top of the page. It's worksheet number 1 of your topic transformation of energy. Question is, write at least one example which shows transformation of electrical energy into heat, light and sound energy. So, we have to show one example which shows the transformation of electrical energy into other energies. So, number 1 is electrical energy of a lamp. When the electrical energy of a lamp will be converted into light, and then it will give out the energy of light energy. Now, number 2 is electrical energy of a toaster. When electrical energy is given to a toaster, it will give out the heated bread, heated toast. So, the energy which will be given out from toaster is the heat energy. Third one is the electrical energy. Electrical energy in a mic. The electrical energy of a mic, it will be converted into sound energy because it gives us sound. Write your answers in front of it. So students, open page number 107. Write date and today's task at the top of the page. It's worksheet number 1 of the topic circuits. The question is, in circle, which circuit is complete, A or B? So students, tell me which circuit is complete? Yes, it's circuit A. Circuit A is complete. Why it is complete? Yes, the switch is closed. When the switch is closed, the circuit is a complete circuit. Now give your answers here. Circuit A is completed because the switch is closed and the current is flowing into the circuit along the metal wires and allows electricity to flow without any interruption. Yes, as I have told you earlier, that circuit is complete only when the switch is closed because the current is flowing through the metal wires which allow electricity to flow without any interruption. This is all about our today's lesson. Now here is a short assessment for you to assess your abilities, that how much you have understood our today's lesson. So number 1 is ability of a body to do work is called dash. Dash is the energy of sound waves. Materials which do not allow electricity to pass through them are called dash. The extra charges present in a material or on its surface are called dash. Quick review of today's lesson. We have studied today resource pack page number 93, 94 and 95 and solved page number 106 and 107. And our today's topics are energy and its forms, electricity and structure of an atom. In the next lesson, we will discuss resource pack page number 96, 97, 98 and solve page number 108 and 110. The topics we will study are static and current electricity. Task to do. Learn highlighted points of page number 93 till 95. Solve and learn page 106, 107 on your resource pack. Fun fact. Clothes made of polyester material carry negative charge, which feel as if sparks are being given off from them. I hope you have enjoyed our today's lesson and you have learned a lot today. So we shall meet you in the next lesson. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.